Hello friends, I am Mukund Adau, PGT Physics, Jawahar Navodaya Vidyalaya Shankarnagar district Nanded. Now friends, in today's class we are going to discuss the concept of uniform and non-uniform motion and the important concept, that is the speed. Okay. Now in last period we have seen the concept of distance and displacement. Can we recall it? Yes. In short, we can recall distance and displacement. How distance is defined? Distance is nothing but it is a total path length covered by the object. Okay. Another thing is there about distance. Distance is a scalar quantity. Distance is measured in meter. Okay. Second quantity we had discussed, that was displacement. What is the displacement? Displacement is defined as the shortest distance between final position and initial position with direction. Okay. Displacement is a vector quantity. Displacement is also measured in a meter. Again, the distance and displacement both are measured in meter because anyhow basically the physical quantity is a length. Okay. Now in this today's lesson we have to discuss the very important quantity, that is the speed. Before that we will discussing this uniform and then non-uniform motion. Okay. Now we will discuss the concepts in detail now one by one. Now the points to be discussed now in today's class. These points are: the first we have to discuss uniform motion and non-uniform motion. Second point we have to discuss, that is the speed, and third point we have to discuss, that is numerical examples. Okay, now one by one we will see. Now to discuss the first point, the concept of uniform motion and non-uniform motion, just we will study the example. Now this example is there here, the motion of two cars, car A and car B is shown. Okay. Now the distance traveled by the car is measured in this respective times. After starting, the distance is measured as 9:30 am, then second 9:45 am, 10 am, 10:15 am, 10:30 am, and then 10:45 am. Okay. That means what is the time interval? Time interval कितना है? 15 मिनट का. मतलब every after 15 minutes distance covered by the object or distance covered by the cars is measured here. ठीक है. Now we will see the motion of a car A and then car B. Okay. Now observe the motion of a car A. At 9:30 it covers 10 km, then 20 km, then 30 km, then 40 km, then 50 km, and at 10:45 it covers 60 km. Okay. Now this was the motion of car A. Now observe the motion of a car B. Now at 9:30 the distance covered by the car B is 12 km, then 19 km, then 23 km, then 35 km, then 37 km, and finally 41 km. Okay. Now we have observed the motion of two cars. Now what is the time interval for first car and second car? Time interval is same. That means distance is measured every after 15 minutes. Matlab time interval is same for both the cars. Now see, in first 15 minutes from 9:30 to 9:45, in first 15 minutes car A covers 10 km to 20, matlab 10 km. Next 15 minutes also 10 km, 20 to 30 matlab 10 km, 10 km, 10 km. बराबर है? मतलब in every 15 minutes car A is covering distance of 10 km. What is about car B? Here also the time interval is same. Now see, in first interval this 15 minutes 12 km to 19 km कितना हो गया? This 7 km. Okay. Now second 19 km to 23, ये कितना होगा? ये हो गया 4 km. Okay. Then 23 to 35, ये कितना होगा? 7 plus 4, ये 12 km. बराबर है? 23, this is 12 km, and then 35 km to 37, it becomes now 2 km. 35 to 37, it is 2 km, and here 37 to 41, now it becomes 4 km. Now the time interval is same for this, but here
in 15 minutes, in every 15 minutes, car A is covering same distance, that is 10 km, but car B is not covering same distance, in a time interval. Sometime it covers more distance, sometime it covers less distance. बराबर कि नहीं? Now, this example, after studying this example, it gives the idea about now what is this uniform motion and non-uniform motion. बराबर कि नहीं? तो कौन से कार की मोशन यूनिफॉर्म होगी, कौन से कार की मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी. ठीक है, तो ये हमको यदि डिफाइन करना है, तो नाउ हियर वी विल डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, सी इंटरवल बराबर 15-15 मिनट का है, यहाँ भी 15-15 मिनट है कि हर इंटरवल में कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर. मतलब टाइम इंटरवल सेम है और डिस्टेंस भी कैसे है, डिस्टेंसेस भी कैसे सेम है. मतलब इक्वल इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, बराबर कि नहीं, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. देयरफॉर इन दैट सेंस कैन वी से दैट the motion of a car is uniform? Yes, the car A is performing uniform motion because it is covering equal distances in equal intervals of time. ठीक है, now we have to see the second type of motion, that is non-uniform motion. See, what is this non-uniform motion? If the object covers unequal distances, in equal intervals of time, it is said to be in non-uniform motion. है कि नहीं? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो कार बी के लिए देखो इक्वल इंटरवल्स तो सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन डिस्टेंसेस कैसे कवर करे, कभी 7 है तो कभी 4 है तो कभी 2 है कि नहीं. दैट मीन्स डिस्टेंस कवर अलग अलग है. मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. देयरफॉर इन दैट सेंस can we say that now the car A is performing non-uniform motion while car A is performing uniform motion. Okay, now get the idea what is the uniform motion and non-uniform motion. Once again, equal distances in equal interval, uniform motion. non-uniform motion के लिए क्या ध्यान में रखेंगे हम लोग, unequal distances in equal intervals. Okay, now next quantity we have to discuss, that is the speed. Now again, to understand this concept of a speed, now here also again we will study example. Again here the two cars are there, car A and car B, and we have to observe the motion of these two cars A and B. Now both the cars has to cover a distance of 60 km up to this destination. ठीक है, इसको भी 60 किलोमीटर कवर करना है, इसको भी 60 किलोमीटर कवर करना है. Now observe the motion of the car. ठीक है, फिर से एक बार ऑब्जर्व इट, हाउ कार A इज मूविंग एंड हाउ कार B इज मूविंग. ठीक है, नाउ कार A कवर्स दिस 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour एंड द कार B कवर्स द सेम 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 hours. मतलब टाइम कौन से कार ने ज़्यादा लिया, कार B ने लिया. मतलब कौन सी कार फास्ट गई, कार A मूव्स फास्ट देन द B. बराबर कि नहीं. मतलब एक कार फास्ट गई, दूसरी कार स्लो गई. बराबर कि नहीं. दैट मीन्स हियर कार A मूव्स फास्ट वी कैन से एंड कार B मूव्स फास्ट. ठीक, अब हम यहाँ पे एक रेशो कंसिडर करेंगे. व्हाट इज दैट रेशो? रेशो इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये जो टोटल डिस्टेंस और लगने वाला टाइम, ये हमने रेशो कंसिडर किया. तो कार A के लिए रेशो क्या हो जाएगा, 60/1 किलोमीटर पर आवर. 60. बराबर कि नहीं. कार B के लिए रेशो क्या हो जाएगा, 60/2. 60/2 वैल्यू इज 30. Now the value of ratio is here 60 and it is 30. बराबर नहीं. Now इस रेशो इज डिस्टेंस टू टाइम. जैसा कि हमने कहा कि कार A मूव्स फास्ट एंड कार B मूव्स स्लो. ये फास्ट मूव हो रहे मतलब इसका रेशो कैसा है, ज़्यादा है. ये स्लो मूव हो रहे हैं, इसका मतलब इसका रेशो कैसा, कम है. मतलब वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट, अनदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो. तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट, then how fast that object is moving. If the object is moving slow, how slow object is moving, है कि नहीं. वो यदि फास्ट जाता है तो कितना फास्ट जाता है, और यदि स्लो जाता है तो कितना स्लो जाता है. ये हमको यदि नापना है तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करें, एक रेशो कंसिडर करें.
and that ratio is distance upon time. बराबर कि नहीं? तो ये ratio is nothing but now it gives the rate. रेशियो मतलब अभी क्या होगा, रेट होगा, बराबर कि नहीं? जिसका रेट ज़्यादा है मतलब वो ऑब्जेक्ट अभी क्या हो रहा है, फास्ट. जिसका रेट कम है वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्लो मूव हो रहा है, बराबर कि नहीं? एंड दैट रेट इज नथिंग बट नाउ दैट इज स्पीड, एंड दैट नाउ वी हैव टू डिफाइन नाउ द क्वांटिटी विच मेजर द रेट दैट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज ए स्पीड. है कि नहीं? स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, ये जो रेट है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन हाउ मच टाइम, बराबर कि नहीं? यदि कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस तय करता है ऑब्जेक्ट, मतलब उसका रेट कैसा है, फास्ट है, मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है, हम कह सकते हैं वो बॉडी फास्टेस्ट बॉडी है, बराबर कि नहीं? और यदि ज़्यादा समय में कम डिस्टेंस तय करता है एक ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो, मतलब उसका स्पीड कैसा है, कम है. तो ये जो रेट डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट का, that rate is nothing but distance upon time, and that is called the speed. Okay, now we are in position defined now speed. How the speed is defined now? The speed, that is the distance traveled by an object in unit time, is called as the speed. It is distance per unit time. The distance traveled by an object in unit time is called as the speed. ठीक है? In terms of the formula we can write it now. Speed is equal to distance upon time. It is the ratio, बिकॉज इट इज द रेट, बराबर कि नहीं? इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, तो एक टाइम में कितना, तो हमको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी रेशियो आएगा दैट विल बी द रेट. देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी कैन राइट द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द लेटर्स. v इक्वल टू s अपॉन t. नाउ हियर स्मॉल v इज यूटिलाइज्ड टू रिप्रेजेंट द स्पीड. s मतलब डिस्टेंस और स्मॉल t फॉर ए टाइम. नाउ सिंस स्पीड इज नाउ न्यू क्वांटिटी, it requires a SI unit to measure, and the SI unit of speed is meter per second or meter per second. It can be written like this also. बराबर कि नहीं? How it comes? Because speed is equal to distance upon time. Now to calculate the unit of speed, we have to see the unit SI unit for distance, that is meter, and SI unit of time, that is second. Therefore total unit become meter upon second, and therefore meter per second. That is the SI unit of speed. Now speed is a scalar. Speed is scalar quantity. Why speed is scalar quantity? Because see, speed is equal to distance upon time. Already it is now declared. What is that? Distance is a scalar. Time is also scalar. Therefore the ratio of two scalars is a scalar. Therefore speed is a scalar quantity. Speed is not having any direction. ठीक है? Now here we have to define one more important quantity, that is average speed. तो speed से ज़्यादा ये average speed बहुत important है, क्योंकि जनरली जैसा यदि हम कहते हैं कि एक गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर तक 60 किलोमीटर पर आवर गई, क्या हर इंस्टेंट पर उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहा होगा? नहीं, कभी वो फास्ट हुई होगी, कभी स्लो हुई होगी, कभी रुक गई होंगी, लेकिन हम जनरली कहते हैं कि वो कितनी गई, 60 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये जो 60 किलोमीटर पर आवर हम जो कह रहे हैं, ये उसका एक्चुअल स्पीड नहीं है, दैट इज ए एवरेज स्पीड. Therefore, है कि नहीं? And therefore now we have to always consider the quantity, that is average speed. Now how this average speed is defined? Average speed is equal to total distance traveled upon total time taken. बराबर कि नहीं? शॉर्ट में हमको, क्योंकि उसका अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड होगा, इसलिए अलग अलग इंटरवल के लिए कितना डिस्टेंस तय किया, वहाँ टाइम कितना लगा, कितना डिस्टेंस तय किया, वहाँ टाइम कितना लगा, फिर बाद में टोटल डिस्टेंस करना पड़ेगा और फिर टोटल टाइम करना पड़ेगा, और जब हम दोनों का रेशियो लेते हैं देन वी विल गेट दिस एवरेज क्वांटिटी, एंड दैट इज एवरेज स्पीड. देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है? तो दिस इज द फार्मूला. नाउ टू क्लियर द कंसेप्ट, नाउ वी विल सी वन एग्जांपल to have the idea of this average speed. Example is that an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ठीक है? तो पहले 16 मीटर 4 सेकंड में उसने तय किए, और दूसरे 16 मीटर moves in just 2 seconds, मतलब फास्ट मूव हुआ है कि नहीं? In that case now we have to calculate the average speed of the object. Now how to solve it? First we have to calculate the total distance, because we have to find the average speed, and formula is total distance traveled upon total time taken, and therefore first we have to calculate the total distance. Total distance will be 16 plus 16, that is equal to 32 meter. ठीक है? Now total time taken 4 into 2 second, ये 4 second, अनंतर
ये next 2 seconds, it become 6 seconds. That will be the time. Now formula, that is there, average speed is equal to total distance upon total time taken. बराबर है कि नहीं? Now just put the value and have the answer. Average speed is equal to 32 divided by 6. Total distance is 32 meter divided by 6. And therefore after calculations it becomes now 5.33 meter per second. This is meter and this is second. Okay, and therefore now the answer is the average speed of the object is 5.33 meter per second. Okay, now here try to solve such a type of examples just to clear the concept. Okay, now there are some questions in the form of homework. Now read the questions carefully, that is in the form of example, and solve it. Examples are: a car travels 20 km in 1 hour and another 40 km in 3 hours. What is the average speed of the car? पहले 20 km 1 hour में, दूसरे 40 km 3 hours में. What you have to calculate the average speed of a car. Second example is there: a bus travel first 20 km with a speed of 40 km per hour and the next 40 km with a speed of 80 km per hour. Find the average speed of the bus. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी केस में here you have to calculate the average speed. ठीक है, तो try to solve it. Okay, now what are the points we have discussed in today's class? The two important points we have seen. The first we have seen the concept of uniform and non-uniform motion. Once again we can simply recall it. If the object is covering equal distances in equal intervals of time, the motion of object is said to be uniform motion, and if the object is covering unequal distances in equal intervals of time, the motion of object is said to be non-uniform motion. ठीक है, then next we have defined the very important quantity, that is the speed. What is the speed? Speed is nothing but it is the distance covered or traveled per unit time. It is, and how the formula for the speed is speed equal to distance upon time. In which unit we will measure the speed? The SI unit of speed is meter per second. ठीक है, one more formula we have seen. What was that? That is the average speed. Average speed is defined as, what is the formula? Average speed equal to total distance traveled divided by total time taken. Okay, so try to make a notes whatever the things you have learned from today's class. Read the books, different type of reference books or textbooks, and make a note and clear the concept. Okay, thank you.